Good morning, children. Welcome back to your business study class. And today we will be discussing about the function of stock exchange. As we have already started the concept of stock market, stock exchange, and the meaning of stock exchange according to the Securities Contract Act 1956. Right? So today we will be starting the function of stock exchange. So let's start. The main function what is performed by stock exchanges providing liquidity and marketability to existing securities. Now when we talk about the stock market or stock exchange, as it was already explained to you, that we basically use to sell and purchase the existing securities of the organization here, right? Existing securities of the organization means the security which are not going to be sold and purchased in the first time, means the securities which is already sold before also. So because these securities are already sold and we are reselling them, so what basically we are trying to do this by the help of reselling, we are basically trying to provide liquidity to the securities into the market. Now liquidity providing basically means when we will sell our securities like shares, like our debentures, into the stock market or stock exchange, we are going to convert that in a form of money. And whenever the securities are converted as a form of money, we say that the liquidity is provided. So that is the first function of stock exchange, providing liquidity and marketability to existing securities. Now next is pricing of securities. Now how the prices of securities are decided? This is basically the prices of securities are decided by the forces of demand and supply, right? Means when the demand will increase and the supply will be less, in that case what will happen, what is going to happen, the prices of that particular security will increase, right? So by the help of stock exchange, where two peoples are coming together, the investor, those who have the excess money, those who want to purchase the securities, and the organization, those who want to sold their securities, right? So this is basically giving a platform to both of them to come together, and by the help of forces of demand and supply from the investor and from the organization, the prices of their securities will be decided. So this is the second function which is performed by stock exchange to decide the prices of securities by the forces of demand and supply. Third is safety of transactions. Now stock exchange or getting the membership of stock exchange require lots of legal or lots of rules regulations. Now once any company which want to listed inside the stock exchange has been listed or registered there, they need to deal with lots of things according to the legal framework which is already made by stock exchange or SEBI, right? So this basically ensure that the investment which is going to be done by the public and the shares which is going to be sold by the organization will have a fair and safe deal in the market, because both of them are going to be regulated by the SEBI rule. Now next is contribution to the economic growth. How the stock exchange is contributing to economic growth? By the help of disinvestment and by the help of reinvestment. और disinvestment और reinvestment किसका हो रहा है इसमें? The disinvestment और reinvestment we are doing here for the existing securities, like जो हमने पढ़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारी होती है वो फर्स्ट हैंड में सिक्योरिटीज इश्यूज नहीं होती हैं. द ओल्ड सिक्योरिटीज आर गोइंग टू बी इशूड और ट्रेडेड इनटू द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? अगर ओल्ड सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं तो इट मीन्स द पर्सन हु हैज़ परचेज द सिक्योरिटीज इज अगेन गोइंग टू रीसेल इट, राइट? सो दैट कॉन्सेप्ट विल बी कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. वहाँ पे वो क्या कर रहा है? डिसइन्वेस्ट कर रहा है, यानी उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था सिक्योरिटीज़ को परचेज करके वो उसे ख़त्म कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है. और री इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? द पर्सन हु इज़ अगेन गोइंग टू purchase that securities. So in this way what is happening, why we used to go through with the disinvestment or reinvestment process? To increase the rate of return. और अगर rate of return increase हुआ तो वो contribute किस में करेगा? Economic growth में करेगा. Now next is spreading of equity cult. Now equity cult spreading basically say that earlier time what happened, most of the organization who used to issue their shares or debenture into the market, what they basically did, that the shareholder who are the older shareholder of the organization, they even used to purchase the new shares of a company also. जैसे ही कंपनी के पास में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आते हैं वो पुराने ही शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को ही परचेज कर लेते हैं, राइट? नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग,
the ownership is not going to be spreaded in this manner. Ownership क्या होती है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में हो जाती है. Why? Because who is the owner of organization? The shareholders are called as the real owner of the organization. अब शेयर्स होल्डर्स, अगर कुछ ही शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास में मोस्टली शेयर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन की, सो दे आर द मेन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज हैपनिंग है, वी आर नॉट एबल टू स्प्रेड आउट द इक्विटी कल्ट. हम इक्विटी कल्ट को नहीं स्प्रेड कर पा रहे हैं, यानी इक्विटी ओनरशिप को नहीं स्प्रेड कर पा रहे हैं. Now by the help of this stock exchange, there was certain rules regulation which has been made which ensure that wider share ownership. Now it regulate that the certain issues are there which supposed to be going to the public. इससे क्या होगा, कुछ नए ओनर्स आपके आएंगे, कुछ नए शेयर होल्डर्स आएंगे और हम इक्विटी को क्या कर पाएंगे, स्प्रेड आउट कर पाएंगे. Next is providing scope for speculation. Now stock exchange is also providing sufficient scope for, or it is also getting you certain information by which we are able to by which we are able to predicate, by which we are able to take out the speculation about the activity. यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के रेट्स और शेयर्स के रेट डाउन होने वाले या इंक्रीज होने वाले, विद इन सम लीगल लिमिटेशन we can able to take out the speculation, or according to that only we will be able to purchase and sell the shares. So it is also giving you a scope for speculation. So this was all about the function which is performed by stock exchange. Now let's see the trading and settlement procedure. Now trading and settlement procedure, this is just a history has been given here, that how into the stock market the trading has been done. Trading of securities has been done. ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होगा कैसे आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सोल्ड और परचेज किया जाएगा. और सेटलमेंट प्रोसीजर बेसिकली से दैट हाउ द पेमेंट विल बी डन and how the securities will be exchanged from or transferred from the organization side or organization account to the investor account. So that whole process is called as settlement procedure. Now before that there is just a little bit introduction has been given over here, that when we talk about trading in securities, now it is going to be executed through online, which is called as screen based electronic trading system. Now this basically what happened here, the buyer and the seller of shares or the debentures are done through a computer terminal. Yani if we talk about the older time, in the older time we used to trade out the securities on the stock exchange floor. स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे जो ट्रेडिंग होती थी सिक्योरिटीज़ की, राइट, वेयर द पीपल दोज हु आर द इन्वेस्टर, दोज हु हैव मनी एंड हु वांट टू परचेज द शेयर्स, दे यूज टू कम into the stock exchange floors. They used to do bidding for the शेयर्स. वो शेयर्स के लिए क्या करते थे, बिडिंग करते थे. जिसकी जितनी ज़्यादा बिडिंग होती थी उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स उसको बिलोंग करते थे, राइट. दिस वाज द ओल्डर सिस्टम. ये कैसा था, एक ओल्डर सिस्टम था जिसको हम बोलते थे ओपन आउटक्राई सिस्टम, राइट. Now, right now, if you talk about the trading of securities has been completely changed from outcry system, open outcry system से अभी completely change हो गई है securities की trading, and it has now started as a online screen based electronic trading system. So this you have to remember that earlier we are using outcry system, open outcry system for trading the securities, and right now we are using online screen based electronic trading system, right. Now online screen based trading system basically say that the buyer and the seller of the shares and debentures will do all those things by the help of computer terminal. यानी कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू क्या करेंगे, आप सिक्योरिटीज़ को परचेज और सोल्ड किया जाएगा, राइट. नाउ व्हेन वी से अबाउट अ कंप्यूटर टर्मिनल, how we will be able to solve this by the help of computer terminal. So for this purpose, a stock exchange has one main computer system, right. This computer system has many terminal. एक स्टॉक एक्सचेंज के बाद में एक मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है विच वर्क एज अ सर्वर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, and that server is having lots of terminal which can work as a form of client for the stock exchange. Now these terminal which is spread into the different places of the country. Now how we are going to trade out the securities here? For this, the stock exchange has appointed the brokers. Brokers are basically the member of stock exchange which play a role of intermediator between the stock exchange and the investor, right. Now trading has been now shifted from the stock market floor, because earlier when we have the trading of securities as a form of open outcry system,
यानी जब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर्स पे बैठ के और बिडिंग करते थे, वो था आपका ओपन आउटक्राई सिस्टम। अभी आपका क्या हो गया, ऑनलाइन स्क्रीनिंग सिस्टम हो गया, राइट। सो नाउ दिस ट्रेडिंग हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्लोर टू broker office. Now broker office, every broker have a one computer terminal, and that is connected with the main stock exchange server computer, right. Now stock exchange has provided website and link to the brokers. Now brokers can link out or log into the stock exchange website and get any information about the shares, about the company, about the investor who want to invest money, and how much share they want to purchase and sell, and they will feed out all these information into their own terminal. The software of stock exchange is designed in such a manner that they will match out the demand of an investor or the broker, and according to that they carry out the computer activities. When the demand which was given by the broker terminal will match with the demand of stock exchange main computer, then the list of the shares and the companies will be handed over to the broker as a form of window only, right. So this is whole process of how the trading of securities was done. Now you can just understand it from here also, that if we are going through with the electronic trading of systems, so it is basically one thing is that we are not going to do more paperwork over there, right, because all the work, there is one broker who is appointed by stock exchange. Broker has one office, he has one terminal link website which is provided by stock exchange, and inside his office only the investor who want to purchase and sell the shares will come there. They will link with their brokers and they can have transparently see the up and downs of share which is happening into the stock market. So this was all about the how the trading is done right now. Now let's see that what are the different advantages which we are going to get when we have electronic trading, यानी जब हम टर्मिनल और कंप्यूटर्स के थ्रू सिक्योरिटीज़ को सोल्ड और परचेज कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं. What are these advantages? The first advantage is transparency. Why transparency? That in case of electronic trading system, because all the work we are doing, the purchasing and selling of work we are doing into the broker office, where even the investor is also sitting near to the computer, and whatever up and downs, whatever fluctuations are occurring into the shares, easily they both of them can able to see. So whatever transactions are occurring over there, it is visible for both of them, and that is the reason it is called as that. Because of the electronic trading system, the trading of securities has become more transparent. The next is, it is increasing the efficiency, because the information which is being passed, it is helping so much to the investor also and to the person who is going to sell their securities also. Next is, it increase the efficiency of operation, because less time is going to be take if you are going to trade out the securities by the help of terminal or by the help of computers. Less cost will be required and even the risk will be less over there. Next is, in case we are going through with the online screening, or in case we are going through with the electronic trading system, in that case what will happen, all over the country, from any side in the country, or even the people who are sitting at the abroad, if they want to purchase and sell any securities from the stock market, they can do it by sitting into the broker office, no matter whether the broker they know or not. Next is a single trading platform. Why a single trading platform? Because whatever transactions the different terminal are going to be do, that all is going to be recorded into the main server of stock exchange. तो जो पूरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो रही है वो किससे गाइड हो रही है और ऑब्जर्व हो रही है? फ्रॉम द मेन कंप्यूटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. दैट इज द रीजन अ सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम इज यूटिलाइज्ड हियर. So this was all about the different advantage of online trading system or electronic trading system. Now in the step in the trading and settlement procedure, now we are going to read out the different steps which are there in the trading and settlement procedure. यानी कौन कौन से steps हमें फॉलोड करने पड़ते हैं अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को, ओल्ड सिक्योरिटीज़ को, इट मीन्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड आउट कर रहे हैं, राइट, और उसका सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होता है. सो जस्ट सी है the first step for if you are going to sell and purchase the existing security into the market of stock exchange, what we are basically supposed to do in the first step. The first step we will be doing is that
If any investor who wish to buy or sell any security, he has to first approach to register broker or sub broker एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यानी जब भी किसी को अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को बेचना या ख़रीदना होता है तो पहला स्टेप जो होता है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का, वो क्या होता है, ब्रोकर के साथ में क्या होना, अप्रोच करना। नाउ दिस ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। ये जो ब्रोकर और सब ब्रोकर होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करता है। हे द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। एक ब्रोकर और क्लाइंट का एक एग्रीमेंट बनेगा और इन्वेस्टर और ब्रोकर को दोनों को इसको साइन करना पड़ेगा। दे हैव टू फिल अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल्सो एंड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर or before buying the securities. Now once that is done, for filling that form the investor will need to fill out certain details, and that is the PAN number. Like it, they are supposed to fill their date of birth. Investor will fill his date of birth in that form, educational qualification, his address, bank account details, his depository account details, where the transaction of money will be done, then the name of any other broker whom he is registered, and the client code number in the client registration form. So once these all things will done, after that only the broker will open a trading account in the name of investor. Now once the investor का trading account खुल गया उसके नाम से, after that the investor has to open a demat account or beneficiary owner account or with a depository participant for holding and transferring security in a demat form. Now once these all detail has been given by the investor to the broker, broker उसका एक trading account खोलेगा जिसमें इन्वेस्टर के नाम से ही अकाउंट ओपन होगा. वंस दैट अकाउंट इज ओपन बाय द ब्रोकर फॉर इन्वेस्टर, राइट, आफ्टर दैट इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. इन्वेस्टर को एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसे हम बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट भी बोलते हैं, राइट. नाउ ये बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट दैट इज BO और डीमेट अकाउंट कौन खोलता है? दीज अकाउंट आर ओपन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दैट इज DP. DPs खोलते हैं आपके. नाउ हु आर दीज DP? दीज आर बेसिकली CSDL और NSDL. NSDL और CSDL हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट. ना इनके कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि डीमेट अकाउंट को ओपन करने, डीमेट अकाउंट को कैसे रन करना और डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं. सो दोज पार्टिसिपेंट आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट. Now for example we can have for example depository participant में बैंक is also one of the example of depository participant जिसका काम हो सकता है डीमेट अकाउंट को ओपन करना. नेक्स्ट इज वंस डीमेट अकाउंट इज ओपन, आफ्टर दैट क्या होता है, द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स. नाउ वंस डीमेट अकाउंट इज ओपन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने डीमेट अकाउंट खोल लिया है, राइट. डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में इन्वेस्टर को एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ब्रोकर को, ब्रोकर के साथ में मिलके, कि उसे किस तरह की सिक्योरिटीज़, किस रेट की सिक्योरिटीज़ और कितने यूनिट में सिक्योरिटीज़ को परचेज और सोल्ड करना है. Now a clear instruction should be given from the investor side to the broker, right, that कि उसको किस तरह की सिक्योरिटीज़ चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ चाहिए, उसको क्या यूनिट प्राइजेस होने चाहिए. once these in all instruction has been given, then the broker will go ahead and he will go through with a deal according to the above mentioned prices of the shares. Now once the deal has been done, यानी उसने जो डिमांड रखेगा ब्रोकर अपनी, एन ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इज इशू टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर. यानी जब इन्वेस्टर अपनी डिमांड ब्रोकर को बता देगा, ब्रोकर उससे क्या करेगा, एक कन्फर्मेशन स्लिप देगा, ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप. किसको? इन्वेस्टर को. वंस दिस ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इज गिवन बाय ब्रोकर टू द इन्वेस्टर, नेक्स्ट वर्क विल बी दैट द ब्रोकर विल गो ऑनलाइन and connect to the main stock exchange and match the share and best prices available. एक बार जब ब्रोकर्स ने क्या कर दिया, ब्रोकर हैज़ गिवन ऑर्डर लिस्ट, कन्फर्मेशन लिस्ट टू हिम, देन द ब्रोकर विल गो टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की वेबसाइट से लिंक करेगा और उस ऑर्डर को उस एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे इनपुट करेगा एंड दे विल ट्राई टू मैच इट विद द प्राइसेस विच आर अवेलेबल इन टू द स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल हैं और इन्वेस्टर किस तरह के शेयर्स परचेज करना चाह रहा है उसको मैच करने की कोशिश करेगा. Now after that when the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. It means once the orders which has been given by the broker, which directly given by the investor, has
मैच विद द स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट से मैच हो गए स्टॉक में, उस तरह स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स हैं पड़े हुए जो कि डिमांड में हैं इन्वेस्टर के, व्हाट विल हैपन देन, द शेयर्स विल बी सेल एंड परचेज, यानी शेयर्स ब्रोकर्स क्या करेगा, उन शेयर्स को खरीद या बेच लेगा, राइट, वॉट एवर वॉज डिमांडेड. In that case, once that is done, it will be communicated to the broker terminal and order will be executed electronically. जैसे ही शेयर्स परचेज या सोल्ड हो जाते हैं, एक ऑर्डर कन्फर्मेशन आ जाएगा ब्रोकर को उसके टर्मिनल में, और जो इलेक्ट्रॉनिकली है वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, अकर्ड हो जाएगा. नाउ द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप. यहाँ पे ब्रोकर एक और स्लिप इशू कर रहा है इन्वेस्टर को, वो है ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप. ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप बेसिकली से which give the acknowledgement that the trading of shares has been done or trading of securities has been done. Now after this, the trade has been executed. Within 24 hours, the broker issue a contract note. The note contain details of number of shares. Now once the trading confirmation slip has been given to the investor, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद में 24 आवर के बाद में ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, किसको, इन्वेस्टर को. This contract note will contain all the details about how many number of shares has been sold or purchased, what was the prices, what was the date, what was the time of deal and what was the brokerage charge, यानी broker के कितने charges उसमें लगे हुए. All these details will be written inside this contract note. This is very important note because in case any dispute will arise between the investor and the broker, this note help out to remove all those type of disputes. Now one more important thing is there, when this note get printed out, contract note जब print out होता है terminal से, a unique order code number is specified into the contract note. Now this is always printed from a stock exchange, यानी stock exchange में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट यूनिक कोड नंबर होता है जो कि उसमें प्रिंट होगा. नेक्स्ट इज, नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर टू द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट. नाउ वंस ऑल दीज थिंग हैज़ बीन डन, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर प्रिंट हो गया है, उसके बाद में क्या होगा, इट इज़ बिकम द इन्वेस्टर ड्यूटीज़ टू डिलीवर द शेयर और सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स. अगर इन्वेस्टर ने पे किया है, इन्वेस्टर ने मनी इन्वेस्ट करी है, तो ये इन्वेस्टर की ड्यूटी हो गई कि वो मनी पे करे और अपने शेयर्स ले, और अगर किसी ने शेयर्स बेचे हैं तो वो मनी रिसीव करे और अपने शेयर को ट्रांसफ़र करे. नेक्स्ट, कैश इज पेड ऑन सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पे in a day which is before T+2 day as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day. Now T+2 day basically say that this is the settlement procedure which is rolling settlement procedure which has been started from 1st April 2003. 1st April 2003 से पहले स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा कोई रोलिंग सेटलमेंट नहीं बनाया था, बट फ्रॉम 1st April 2003 में एक रोलिंग सेटलमेंट बनाया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस रोलिंग स्टेट सेटलमेंट, all the trading has to be settled within 2 days. That is the reason it is written T+2, यानी ट्रेडिंग डेट से लेके 2 दिन के अंदर उस ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी सेटलमेंट हो जानी चाहिए. सेटलमेंट इन द सेंस कि पेमेंट हो जानी चाहिए और जो सिक्योरिटीज़ हैं जो सोल्ड या परचेज हुई हैं वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए उसके रियल ओनर्स को. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड, दिस इज़ अ न्यू रोलिंग सेटलमेंट विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1st April 2003. Now next is, on T+2 day, the exchange will deliver the share or make payment to the other broker. This is called payout day. It means, as in the beginning we have discussed that if any organization who is going to list out their securities in the stock market, they are required to list it into two. एक तो stock exchange में वो list होगा ही होगा market में, और उसके अलावा भी उसको एक दूसरे मार्केट में, शेयर मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है, राइट. नाउ इन दैट वे दे नीड टू पे आउट अ पर्टिकुलर अमाउंट विच इज़ कॉल्ड एज पे आउट डे. यानी जो ब्रोकर्स, जिन ब्रोकर्स के थ्रू वो रजिस्टर हो रखे हैं, किसी स्टॉक मार्केट के किसी भी 2 ब्रोकर्स पे उनको रजिस्टर होना पड़ रखा है, द सेकेंड ब्रोकर को उन्हें क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करनी पड़ती है 24 आवर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पे आउट डे अमाउंट, राइट. Next is, the broker can make delivery of share in demat form directly to the investor demat account. Now here the new concept has come, that was demat, right. Now once everything has been done, now it become the responsibility of a broker that जो demat account खुला हुआ है सिक्योरिटीज़ के लिए. व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट? डीमेट वी कैन अंडरस्टैंड दैट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज़, वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. द सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक.
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को ट्रांजेक्शन करने के लिए अकाउंट इज सपोज टू बी ओपन फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड एंड दिस इज डन फ्रॉम अ ब्रोकर साइड, यानी ब्रोकर बोलता है इन्वेस्टर को एक अकाउंट खोलने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर, उस अकाउंट्स में वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखता है, राइट। एंड सेविंग द securities as a form of electronic में is called as demetallization, right। और जिस अकाउंट को हम जिसमें हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं उसको अकाउंट को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। नाउ वंस एवरीथिंग हैज़ बीन डन, जब सब कुछ सेटल हो जाता है, ऑल द सेटलमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ब्रोकर टू मेक और टू सी that the securities or electronic securities which are stored into the demat account of an investor should be passed from him to the real owners, right। So this is again the duties of a broker. Now this was all about this procedure and about the settlement. Now we will be talking about, next we have, now we will be talking about what is dematerialization, what is demat, and what is depositories, right। Now you have to understand it from here that dematerialization, demat है क्या, demat is basically account, right। demat क्या होता है, एक अकाउंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही खोला जाता है। Now why demat has been opened or how this concept of dematerialization or depositories has come. So for this we have to go through with this concept that all trading in securities is now done through computer terminal. Since all systems are computerized, buying and selling of securities are settled through an electronic book entry form. This is mainly done to eliminate problems like theft, fake, forged transfers delay in paperwork with the shares certificate or debentures held in physical form. This is a process where securities held by the investor in a physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she can hold it in as a form of electronic balance in account. This process of holding securities in an electronic form is called as dematerialization. Now this is important here, dematerialization आ गया, that right now what we are doing, we are trading the securities right now by the help of computer terminal, right। All the buying and selling of securities are settled through a electronic book entry form right now. Earlier it was supposed to by the help of paperwork, but अभी paperwork के through नहीं होता है, right। Now this is basic a process what we are basically doing here, we are keeping our securities by the investor in a physical form आर कैंसलिंग, यानी जो सिक्योरिटीज़ जिसको ट्रेड होनी थी स्टॉक मार्केट में, जिसको इन्वेस्टर एक फिजिकल फॉर्म में रखता था, राइट। सिक्योरिटीज़ को आप समझ सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स से भी, राइट। नाउ दैट फिजिकल फॉर्म इज नाउ कैंसिल. Now investors need to keep all those securities as a form of electronic entry, right, or keeping that electronic balance in their account. So the process of holding securities in an electronic form is called as dematerialization. यानी वो एक पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू इन्वेस्टर क्या करता है, ब्रोकर की हेल्प से सिक्योरिटीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, उस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमेटलाइजेशन बोलते हैं, और उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं, राइट। नाउ for this purpose, the investor has to open a demat account with an organization called as depository. It means dematerialization के लिए, dematerialization means जहाँ पे कि physical securities को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक उसमें, राइट। उसके लिए वो प्रोसेस थी आपकी डीमेटलाइजेशन. फॉर डूइंग द डीमेटलाइजेशन प्रोसेस द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. उसके लिए इन्वेस्टर क्या करेगा, एक डीमेट अकाउंट ओपन करेगा. एंड डीमेट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन बाय एनी वन. डीमेट अकाउंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी. It means the investor has to open a demat account with an organization which is called as depository. या वही वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टर के लिए डीमेट अकाउंट खोलेंगी उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी बोलते हैं. एंड डिपॉजिटरी के कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं, राइट, यानी हु वर्क एज अ मेंबर फॉर डिपॉजिटरी, दीज आर कॉल्ड एज डीपी, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. फॉर एग्जाम्पल आई कैन एक्सप्लेन यू, लाइक इफ़ यू टुक एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ओनली. स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन कंप्यूटर होता है एंड स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर दिया, अपने
मेंबरशिप को इंक्रीज करने के लिए टर्मिनल डिवाइड कर रखे हैं प्लेस टू प्लेस में. द सेम थिंग इज दे दैट व्हेन द डीमेट अकाउंट इज ओपन, डीमेट अकाउंट कौन ओपन करता है? डिपॉजिटरी ओपन करती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट. लाइक बैंक इज ऑल्सो डिपॉजिटरी, बैंक भी एक डिपॉजिटरी है. बैंक भी क्या कर सकती है? किसी के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ईच एंड एवरी एरिया वी विल हैव अ डिपॉजिटरी, हर एक और एरिया में डिपॉजिटरी हो हमारे पास में. हमारी जो मेन डिपॉजिटरी इंडिया में है वो आपकी NSDL है और CSDL है, राइट. टू डिपॉजिटरी हैं. नाउ दीज टू डिपॉजिटरी हैज़ मेक सर्टेन मेंबर्स टू वर्क विद इन देम. On these all members are called as depository participant, right? So now when we talk about dematerialization, most of the time 99% of the work or settlement work is now done by the help of dematerialization or by the help of demat account only here. Now this was all about this dematerialization and depository. Now we will be talking about working of the demat system, यानी demat system work कैसे करता है, यानी demat account खुलता कैसे है. So first, a depository participant, either a bank, broker or financial services company may be identified. सबसे पहले the company who want to sell their securities or the people who want to purchase, they need to identify the depository participant. Depository participant कौन होते हैं? depository के member होते हैं, right? And because they are the one who will be opening demat account for them. और कौन कौन हो सकते हैं DP? आपका बैंक हो सकता है, हु प्ले एज अ रोल ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ब्रोकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, कंपनी हो सकती हैं, राइट. नाउ वंस दे आर आइडेंटिफाई, एक बार डीमेट अकाउंट खोलने के लिए द DP हैज़ बीन आइडेंटिफाई. आफ्टर दैट फॉर ओपनिंग अकाउंट दे रिक्वायर टू फिल आउट अ फॉर्म. उस फॉर्म में दे नीड टू फिल आउट सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स लाइक पेन कार्ड्स, photograph, power of attorney. These all are supposed to be completed. Once that is done, the physical certificate is to be given to the DP. ये सब कंप्लीट करने के लिए बाद में इन्वेस्टर क्या करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक फिजिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. फिजिकल सर्टिफिकेट बेसिकली मीन्स जो उसने डीमेटलाइजेशन किए, यानी फिजिकल कोई भी सिक्योरिटीज़ का जो फिजिकल फॉर्म है उसके लिए वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा उन्हें. वंस दैट सर्टिफिकेट इज़ प्रोवाइडेड, if shares are applied in a public, other simple details of DP and demat account are to be given, and shares on allotment would automatically be credited to the demat account. It means अगर सिक्योरिटीज़ को सोल्ड किया जा रहा है या सब्सक्राइब किया जा रहा है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, इन दैट केस में जो DP होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, their name or account details will also given to the public, right? If we are giving shares to subscribe from the public, and in case it is not given directly to the public, so in that case we don't need to give the name of DP and demat account. नेक्स्ट इज इफ़ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर्स. अगर शेयर्स को हम जो ट्रेड कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को हम जो बेच रहे हैं वो ब्रोकर्स के थ्रू बेच रहे हैं, यानी इंटरमीडिएटर्स के थ्रू बेच रहे हैं, विच इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टॉक मार्केट. The DP is to be instructed to debit the account with the number of shares. Now it become the responsibility of the depository participant कि वो क्या करेगा, अकाउंट को डेबिट करेगा अपने नंबर ऑफ शेयर से. नेक्स्ट इज द ब्रोकर देन गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज DP for delivery of the shares to the stock exchange. After that, the broker will learn who will be linking with the depository participant. He will be giving instruction to the DP. यानी ब्रोकर का काम होता है सेल और परचेज करने का, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम क्या होता है? सेटलमेंट करने का, राइट. तो एक बार ब्रोकर्स ने सेल और परचेज कर लिए सिक्योरिटीज़ को, तो ब्रोकर इंस्ट्रक्शन देता है DP को डिलीवरी करने के लिए शेयर्स की to the stock exchange. Next is the broker will then receive payment and pay the person for the shares sold. Now after that the broker will get payment from the investor and will give payment to the person who have sold their shares. Last is all these transactions are to be completed within 2 days. Delivery of shares and payment received from the buyer is on T+2 basis settlement paid. Now once all these thing has been done, now it become the responsibility of the depository participant, because he is the one who is handling the demat account. यही है जो demat account को handle कर रहा है, right? सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के विदिन 2 डेज़ के अंदर वो सारे शेयर्स या पेमेंट की जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट करा दे. ही हैज़ टू फॉलो द मेन रोलिंग सेटलमेंट दैट वाज T+2 विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2003. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैसे डीमेट अकाउंट वर्क करता है.
Now we will be going through with the depository. Now depository है क्या? For example, we can understand like bank is there. What bank did for us? Bank basically keep money in a safe custody for the customer. बैंक क्या करता है? Money को अपनी safe custody में रखता है customer के लिए. In the same manner, depository also like a bank. Depository जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बैंक की तरह ही होते हैं. They keep securities in a electronic form on behalf of the investor. यानी जो investor जो होते हैं वो उनकी सिक्योरिटीज़ को अपने पास में सेफ एरियाज़ में रखते हैं इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है हु हैज़ शेयर्स, हु हैज़ डिवेंचर, जो कि मार्केट में सोल्ड करना चाहते हैं, उन्हें ट्रेड करना चाहते हैं, दे विल अपॉइंट डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी उनके शेयर्स को, उनके सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास में रखेगी. सो इन द डिपॉजिटरी ऑफ अ सिक्योरिटीज़ अकाउंट कैन बी ओपन. डिपॉजिटरीज क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ के लिए एक अकाउंट ओपन करेगी. All shares can be deposited, they can withdrawn, sold at any time, and instruction delivered to receive shares on behalf of the investor can be given. Now selling these shares, now when the shares will be purchased, when the shares will be sell, instruction will be given from investor to the depository, and depository work will be to run out the demat account. depository का काम होगा वो demat account को run कराएगा और इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज़ को स्टोर करके रखेगा और वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड उनको एक्सचेंज करेगा. राइट. सो दैट ऑल वर्क इज़ डन फ्रॉम डिपॉजिटरी. ना दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस वेरी मच, बट यू शुड बी नोइंग कि हमारे इंडियाज़ में जो है 2 डिपॉजिटरीज वर्क करती हैं. एक है आपका NSDL, दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया. यानी इंडिया में अगर सबसे बड़ी कोई डिपॉजिटरी है तो NSDL ही है. नाउ NSDL, it is not possible by this institution to run the depository work of each and every way. So इसने अपने कुछ members बना रखे हैं, कुछ participant बना रखे हैं, right? Which is called as depository participant, DP, right? Like IDBI, आपका UTI हो गया, and National Stock Exchange. So these all are the depository participant of NSDL, जिनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीमेट अकाउंट खोलना, उनके शेयर्स को फिजिकल फॉर्म को रिकन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना. The second depository of India is your Central Depository Service Limited, that is CSDL, and this is the second depository to commence operation and was promoted by Bombay Stock Exchange and Bank of India. Right? It means that CSDL के जो participant है वो कौन हो गया? BSC हो गया आपका और Bank of India हो गया. Now, the depository participant DP serve as an intermediary between the investor and the depository who is authorized to maintain the account of dematerialized shares. It means dematerialization और डीमेट अकाउंट को बनाना, रजिस्टर करना, वर्कआउट करने की जो अथॉरिटी होती है, ऑथराइजेशन किसको मिल रखी है? सिर्फ डिपॉजिटरीज़ को मिल रखी है. एंड डिपॉजिटरीज़ कौन है हमारी? NSDL और CSDL. नाउ व्हाट इज़ DP? DP is basically a DP is basically a person or an institution which is serving as an intermediary between the investor और depository. यानी NSDL और CSDL और investor, इनके बीच में जो इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? DP कर रहा है, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. एंड दीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय the depository to maintain the dematerialized accounts, to maintain the dematerialization of shares. Right. Now next we have National Stock Exchange of India, NSE. Children, this is removed from your syllabus. We will be directly talking about stock exchange now. SEBI, Securities of Exchange, Securities and Exchange Board of India. Now if we talk about stock exchange, we have in our earlier in the last year we have in our syllabus the National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India. This time we will be directly going through with the CV, that is Security and Exchange Board of India, in our next video.